Hello everybody, a very good morning and welcome to yet another धमाकेदार, फर्राटेदार and मजेदार session by Embibe with me, Pritesh, your host, your dost and a proud educator from Embibe, welcoming you to this very interesting, unique and one of its kind session called Trickology to Master Biology. What is this session all about? आज के सेशन में हम कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे जो हमें बायोलॉजी को मास्टर करने में हेल्प करेंगे. बट बिफोर वी मूव अहेड, देयर इज सम इंफॉर्मेशन दैट आई वुड लाइक टू गिव यू. दैट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मस्ट विजिट द एम्बाइब पेज फॉर अ स्मूथ, इफेक्टिव एंड एब्सोल्युटली मक्खन लर्निंग ऑफ योर CBSE grade 10. So whether you are in CBSE grade 10, 9, 8, 7, 11, 12, whatever grade you are in, if you want to learn smoothly, effectively, you must visit the Embibe page, because this is the page where you get all your books, all your questions, all your tests, all your solutions. One stop destination that a student, any student can ever ask for is right here for you. So make sure that you visit the Embibe page. Apart from that, I would also like to tell you that you must join us on our Telegram channel by just scanning this QR code. Now this Telegram channel is a way in which आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. उसी के साथ साथ अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो उन डाउट्स का सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा. उसी के साथ साथ आपके यूट्यूब चैनल, इस यूट्यूब चैनल एम्बाइब अचीव 9th and 10th, जिसको आपको राइट नाउ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, इस चैनल पर होने वाले सारे वीडियोस की फ्री पीडीएफ्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है. So make sure that you scan the QR code and join us on Telegram. Now, starting the session, talking about Trickology to Master Biology. Before that, it's very important कि हम ये समझ सकें कि हमारे बायोलॉजी का जो सेक्शन है आपके ग्रेड 10 साइंस का, वो कितने मार्क्स के लिए है. ठीक है. So when I talk about biology in your grade 10 boards, आपकी ग्रेड 10 की जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें बायोलॉजी आने वाला है 30 मार्क्स के लिए. कितने मार्क्स के लिए? 30 मार्क्स के लिए. ठीक है. ये जो 30 मार्क्स हैं ये डिवाइडेड है आपके वर्ल्ड ऑफ लिविंग, है ना, जो आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग चैप्टर है, जिसमें है आपके पास हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपका लाइफ प्रोसेसेस, हेरिडिटी, एवोल्यूशन तो स्क्रैप हो चुका है, एंड आखिरी आता है आर एनवायरनमेंट. तो टोटल आपके बायोलॉजी के जो 5 चैप्टर्स हैं, है ना, कौन से 5 चैप्टर्स हैं? वो 5 चैप्टर्स हैं लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, how do organisms reproduce, heredity, evolution तो है नहीं, and environment. ये आपके 5 चैप्टर्स है बायो के, which are for 30 marks in your board exam. ठीक है. अब जब हम how do organisms reproduce की बात करते हैं, वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं asexual reproduction, vegetative propagation, types of vegetative propagation, sexual reproduction, variation, right, male reproductive system, female reproductive system, menstrual cycle and reproductive health. जब हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करते हैं तब हम ये देखते हैं कि कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग है. We see the different life processes which makes an organism living and distinguishes it from a non-living organism, and these processes are nutrition, transportation, respiration, excretion, right? These are the 4 processes which we discuss in detail in plants, animals as well as microorganisms. Then we come to the next chapter, that is control and coordination, where we discuss about the nervous system, the human nervous system, which has central nervous system consisting of your brain. We discuss the structure of the brain. Consisting your spinal cord, we discuss the structure of the spinal cord, the vertebral column, the backbone,
Then comes your peripheral nervous system, where we talk about spinal nerves, cranial nerves, all the nerves of your nervous system. And then comes the autonomic nervous system, where we discuss the sympathetic and the parasympathetic. Then we move on to plants, and we talk about the plant nervous system. You know how plants don't have a nervous system, but how do plants respond to different kind of stimuli like geotropism, gravitotropism, hydrotropism, chemotropism, phototropism. And then we move on to the next chapter, that is heredity. Here we understand what is heredity, what is variation, the sex determination. We talk about the, the father of genetics, that is Mendel, Gregor Johann Mendel. We talk about his experiments with Pisum sativum. We talk about monohybrid cross, dihybrid cross, genotype, phenotype, everything. And then comes the last chapter, that is our environment. When it comes to our environment, we talk about what exactly is an ecosystem, food chain, food web. We talk about, biodegradable, non-biodegradable waste. We talk about eutrophication, biomagnification, CFC, ozone, global warming, greenhouse effect, and all that stuff. In this manner, your entire biology consists of 5 chapters, which total to 30 marks in your board examination. And मैंने आपको ये भी बोला है कि आप मेरे वीडियोस अचीव 9-10th एम्बाइब चैनल पे देखिए, एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ, आई प्रॉमिस यू, आई एम टेलिंग दिस लाइव ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, I will make sure that you get 30 on 30 in biology. All you have to do is give this video a big fat thumbs up, share this video with your friends and school WhatsApp groups, and also guys, subscribe to the channel and let me know in the comment section where you are facing difficulties to master bio, and I will plan my sessions accordingly. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं to trickology to master biology. What do we have here? We have got here certain tips and tricks that one must follow while learning biology. That is, number 1, practice diagrams as much as possible. Now, diagrams are a very integral part of your biology. And when it comes to your grade 10, here we have got diagrams like the alimentary canal, the circulatory system, the heart, double circulation, human respiratory system, human excretory system, kidney. Right? We have brain is not usually asked, but parts of the brain can be asked to label and to mention their function. Male reproductive system, female reproductive system. There can be asked a diagram on the structure of sperm, structure of ovum. A monohybrid, dihybrid, cross, Punnett square can be asked. And all these diagrams will be taught to you in detail, as I have mentioned in my previous session, that I will be taking an exclusive class जहाँ पे हम लोग diagram साथ में draw करेंगे, उसे लेबल करेंगे एंड सीखेंगे कि कैसे नीट क्लीन लेबल डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं. सो वी विल बी डूइंग ऑल द डायग्राम्स टुगेदर. इन द मीनवाइल यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू कैन. सेकेंड पॉइंट, मेक श्योर टू नोट डाउन ऑल द इम्पॉर्टेंट टर्म्स, डेफिनेशंस, थियोरीज, डायग्राम्स, फंक्शंस एंड लोकेशन एज वेल. इसमें से हमने टर्म्स एंड डेफिनेशंस के ऊपर एक एक्सक्लूसिव क्लास की है, जहाँ पे देयर इज अ क्लास ऑन most important definitions in your biology for grade 10. Watch that session, you are sorted. और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं. ठीक है? Then we come to the next point. It will be best if you prepare biology based on weightage of topics according to CBSE. I already told you biology is for 30 marks. Each chapter mota moti is divided or is allotted 6 marks. ठीक है? This is your biology. 5 chapters for 30 marks. Next point, work on difficult terms, definitions and theories. Also, biology is a very theoretical subject. You have to kind of remember it. It's a memory based subject. ठीक है? The best part about biology and how it makes it unique as compared to physics and chemistry is that biology is all around you, right? Your जो ये 5 चैप्टर्स हैं, वो 5 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर्स तो आर इन योर ओन बॉडी, 3 नहीं, रादर 4 चैप्टर्स आर इन योर ओन बॉडी, एंड आर एनवायरमेंट इट्स ऑल अराउंड अस. ठीक है? बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू इन द मिरर एज वेल, इट इज राइट विथ यू ऑल द टाइम. ठीक है? देन डू नॉट फॉरगेट टू कवर ऑल द टॉपिक्स गिवन इन द एनसीईआरटी बिफोर मूविंग टू सप्लीमेंट्री बुक्स. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो एनसीईआरटी है वो आपकी बाइबल है. जो आपकी एनसीईआरटी है उसको इस तरह से घोट के पी लेना है दैट अगर गॉड फॉरबिड कभी इंजरी हो और ब्लड आने लगे तो आपके बॉडी में से ब्लड नहीं, एनसीईआरटी की लाइंस आनी चाहिए. इस तरह से एनसीईआरटी को घोट के मगअप करके पी लेना है.
ठीक है. So that is all about your tips. Now let's move on to the tricks. Let's move on to the simple to do tricks to master biology. Number one is flashcards. Now what do you mean by a flashcard? Flashcard का मतलब क्या होता है? एक अभी flashcard हम बना लेते हैं. You should have vocabulary word on it, and other side you should have a definition or a picture. For example, I take a flashcard, ठीक है, and यहाँ पर मैंने लिखा synapse, ठीक है, ये है उसका फर्स्ट साइड. The second side of the flashcard, will have a diagram which will show what is synapse exactly. It's the point of junction between two neurons where exchange of information or impulse takes place. And यहाँ पर होगा उसका definition. Flashcards बनाओ, है ना. बहुत टाइम है अभी आपके पास. Today we are what? Today we are on the 25th of November. You have still got 3 months 5 days with you, है ना. हमने जो टॉपिक किया है, हमने जो एक वीडियो किया है ऑन शॉर्ट डेफिनेशंस, वो टर्म्स लो, उनके फ्लैश कार्ड्स बनाओ and make them very beautifully. The more neat and the more beautiful you make your flashcards, the better it will be for you to learn. And keep them, because ये आपको आगे 11th 12th में भी काम आएंगे. प्लस आपके अगर यंगर सिबलिंग्स हैं, अगर आपके यंगर फ्रेंड्स हैं, या अगर वो भी नहीं है, आप अकेले हो जो 10th स्टैंडर्ड में हो, तो आपके बायोलॉजी या साइंस के टीचर को वो फ्लैश कार्ड्स दे देना. बिफोर आपका बोर्ड एग्जाम जब हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम हो जाने के बाद अपने साइंस टीचर को वो फ्लैश कार्ड्स दे देना. शी विल बी एबल टू यूज इट एंड शी इज गोइंग टू बी सुपर ही और शी वॉट एवर, दे आर गोइंग टू बी सुपर हैप्पी टू हैव दोज फ्लैश कार्ड. ठीक है, तो मेक फ्लैश कार्ड्स, यूज देम एंड ऑल्सो पास देम ऑन. Next, the next trick is learn concepts with diagrams. Our brains retain more when they see it. So visual learning, when you see and learn, that is the best type of learning. And for that, I'll also give you a very interesting way. एक ऐसा तरीका जो आपने एक बार देख लिया, वो कभी नहीं भूलोगे, वो हमेशा आपके साथ रहेगा. और वो है ये करने के लिए, विजुअल पिक्चर्स के थ्रू लर्न करने के लिए, 3D डायग्राम्स के थ्रू लर्न करने के लिए, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गो टू imbibe.com. imbibe.com पे चले जाइए. यहाँ पे आपको आपके सारे जो भी डायग्राम्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स है, उनका आपको लाइव आपके सामने कम अलाइव 3D असेट मिलेगा. ये 3D असेट को घुमाइए, कैसे भी घुमाइए, इसके साथ खेलिए, एंड आपको वो जो एक्सपीरियंस है, जब आप हार्ट को ह्यूमन हार्ट को जब आप मूव कर पाओगे, ह्यूमन हार्ट के साथ जब आप खेल पाओगे, ह्यूमन हार्ट को जब आप जूम करके उसके अंदर जा पाओगे, वो एक्सपीरियंस आपके दिमाग में लाइफ लॉन्ग रहेगा, राइट. एंड वो लर्निंग आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी. तो मेक श्योर दैट यू विजिट द एम्बाइब पेज which will give you 3D experience of all the concepts of biology. चाहे वो sperm cell हो, या चाहे वो human cell हो, या चाहे वो reproductive system हो, या वो मेंडल के laws हो, वो सभी आपके सामने alive आएंगे 3D में, जिनके साथ आप खेल कर, जिनके अंदर जाकर आपकी लर्निंग होगी बिल्कुल भी स्मूथ, बिल्कुल भी इफेक्टिव. And that's why I tell you, Imbibe page is your one-stop destination when it comes to effective and smooth learning. ठीक है, ये थी आपकी नेक्स्ट टिप. अब इसके अलावा क्या है हमारे पास? तो डिवाइड योर सिलेबस इनटू स्मॉल सेगमेंट्स, जस्ट लाइक दिस क्यूट लिटिल एम्बी इज डूइंग. ही इज सो क्यूट. कैन यू सी कितने आराम से वो जगलिंग कर रहा है. जगलिंग क्यों कर पाते हैं हम? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियांशी, वेरी गुड मॉर्निंग. नाउ what I'm telling you over here is you need to divide your syllabus. We know we have got 5 chapters. जिसमें से आर इन्वायरमेंट को 5 मार्क्स है, बाकी जो 4 चैप्टर्स है उनको 20 मार्क्स है. ठीक है, दैट इज 5 4 20. तो एवरी चैप्टर इज गिवन 5 मार्क्स. तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू डिवाइड योर सिलेबस इन सेगमेंट्स, है ना. सेगमेंट्स में डिवाइड कर लो उसको. जितना डिवाइड करोगे उतना लर्न करना ईजी होगा. खुद के नोट्स बनाओ. मैं एक स्पेशल क्लास कंडक्ट करूंगा. You tell me which chapter you want in the comment section. Let me know which chapter you want and I will make live notes with you on that chapter. ठीक है,
I'll make live notes with you on that chapter in the class, so that it will be here forever, right? So divide the chapter into segments. It will help you to understand in a better and deeper level. Small scale study helps us to understand, and it will also reduce your pressure during revision time. जब आपके पास अपने खुद के हैंडमेड नोट्स होंगे, जब आपके पास अपने खुद के फ्लैश कार्ड्स होंगे, उस समय लर्निंग विल बी मक्खन क्लियर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी, राइट? तो आपको मतलब बहुत अच्छे से समझ आएगा. तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग किन किन चीज़ों की बात करते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग किन किन चीज़ों की बात करते हैं? हम लोग पहले बात करते हैं ब्लड, फिर ब्लड वेसल्स, एंड देन वी टॉक अबाउट हार्ट. हार्ट में सब कुछ आ गया, हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट का पंपिंग, डबल सर्कुलेशन, एवरीथिंग. एंड देन वी टॉक अबाउट ब्लड प्रेशर, एंड हार्ट डिजीजेस. जब हम हार्ट डिजीजेस की बात करेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट स्पैग्मोमैनोमीटर एंड ईसीजी, आर्थेरोस्लेरोसिस, आर्टेरोस्लेरोसिस, कार्डियक अरेस्ट, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ऑल दिस वी टॉक अबाउट इन हार्ट डिजीजेस. ठीक है. दिस इज हाउ आई हैव डिवाइडेड द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ब्लड, हियर आई टॉक अबाउट structure of blood. It is a fluid connective tissue. We talk about the different components of the blood, that is the plasma and the corpuscles. We talk about what is there in the plasma, what are the three types of blood corpuscles, RBC, WBC, platelets. RBC का हम structure discuss करते हैं, biconcave in shape, right? It has got hemoglobin, how hemoglobin combines with oxygen, how hemoglobin combines with carbon dioxide. WBC में we discuss how I have got granulocytes, agranulocytes. ग्रैन्युलोसाइट्स के 2 टाइप्स, अग्रैन्युलोसाइट्स के 3 टाइप्स, ऑल दैट वी डिस्कस. वी टॉक अबाउट प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स, हाउ डू दे cause a blood clot, prothrombin, thrombin, fibrin, fibrinogen, all of that we discuss in blood. Then when we talk about blood vessels, here we talk about arteries, veins and capillaries. How arteries divide to arterioles, arterioles divide to capillaries, capillaries combine to form venules, venules combine to form veins. We talk all of that, the structure, how veins have got valves, है ना, how blood flows under high pressure, low pressure, under arteries and veins, वो सब कुछ हम लोग blood vessels में discuss करते हैं. Then we talk about the heart. When we are talking about the heart, we talk about its location, we talk about its structure, we talk about, the entire structure of the heart, 4 chambers, all the different blood vessels coming and going through the heart, and then we talk about the pumping of the blood. Here we talk about double circulation, pulmonary, systemic, how it, how the 4 chambers, they do not allow the mixing of the blood, etc., etc. We talked about which animals have got 4 chambered heart, which have got 3 chambered heart, which have got 2 chambered heart. All of that we discuss when we are talking about heart. And when we talk about blood pressure, we understand what is blood pressure, what is the normal blood pressure, how is blood pressure measured, what happens when blood pressure becomes too high, that is hypertension, what happens when blood pressure goes too low, है ना, all of that we talk in blood pressure. And then as I had mentioned, heart diseases की जब हम बात करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी हार्ट डिजीज़ होती हैं, वो क्यों होती हैं, उनको कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, व्हाट इज़ अ पेस मेकर, है ना, व्हाट इज़ अ एसए नोड, साइनो आर्टेरियल नोड क्या होता है. बट ये सब जो हार्ट डिजीज़ का सेक्शन है ये आपको मोस्टली ग्रेड 11th एंड 12th में है, ग्रेड 10th में आपको बस यहाँ तक है. ठीक है. बट बिकॉज आई वॉन्ट यू टू नो मोर, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी मोर इंफॉर्मेटिव, दैट्स वाई एम गिविंग यू ऑल दिस इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ तक ये 4 पॉइंट्स आता है आपके ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में. तो ऑल आई वांट नाउ फ्रॉम यू इज, यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको कौन से चैप्टर के नोट्स चाहिए, एंड आई विल डू अ लाइव क्लास, ब्लैंक स्क्रीन, पूरा स्क्रीन ब्लैंक होगा, हम लोग साथ में मिलकर टुगेदर वी विल मेक द नोट्स. तो जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन विच चैप्टर नोट्स यू वांट, राइट. चलो, सो नेक्स्ट
trick is mnemonics. Now mnemonics तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा सिंपल ट्रिक है टू रिमेंबर बायोलॉजी. एज आई टोल्ड यू इट्स अ थेरोटिकल सब्जेक्ट. हाय रिनी, यू वांट ऑन हेरिडिटी? नो प्रॉब्लम. चैट में नहीं रिनी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो. कमेंट सेक्शन में बता दो कौन सा चैप्टर चाहिए एंड आई विल डू अ स्पेशल सेशन ऑन इट. बाय द वे रिनी, टॉकिंग अबाउट हेरिडिटी, मंडे यानी कि 28 ऑफ नवंबर को सुबह 11 बजे देयर इज अ मास्टर क्लास ऑन हेरिडिटी. पूरा चैप्टर आपको एक क्लास में करवाया जाएगा. मेक श्योर दैट यू अटेंड इट. ठीक है. नाउ employ mnemonic devices. They are strategies to improve memory. They help to learn and recall. Example, to remember the types of white blood cells: neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils, basophils. These are the 5 types of lymphocytes. So what I have: never let monkeys eat bananas. Never let monkeys eat bananas. Never, N से आया neutrophils, let L से आया lymphocytes, monkeys M से आया monocytes, eat E से आया eosinophils also called as acidophils, and B bananas से आया basophils. Never let monkeys eat bananas. I also have few, like when I have to tell about parallel venation, when I have to talk about parallel venation, I also have a formula that is PFRT. Parallel venation will have fibrous root, reticulate venation will have taproot. This is how I remember. है ना. जो अपने 8 प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, उनको रिमेंबर करने के लिए भी एक निमोनिक है. माई वेरी अर्नेस्ट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स और समथिंग लाइक दैट. तो इस तरह से निमोनिक्स जो हैं दे आर आवर ओन टिप्स एंड ट्रिक्स दैट वी कैन डू. आप खुद का भी निमोनिक बना सकते हो एंड यू कैन जस्ट मूव अहेड. जैसे व्हेन आई वाज टीचिंग ग्रेड 8 में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में इरिगेशन है. इरिगेशन में देयर इज ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इरिगेशन. ट्रेडिशनल इरिगेशन में 4 मेथड्स है: मोट, डेकली, राहट एंड चेन पंप. तो वो मैंने कैसे याद रखा है? मिस्टर डोनाल्ड कैन रन. एम मोट, डी ढेकली, सी चेन पंप एंड आर राहट. ठीक है. मोट, ढेकली, राहट एंड चेन पंप. दिस हाउ आई रिमेंबर. तो इसी तरह से आप लोग भी अपने खुद के निमोनिक्स बना सकते हो. कई बार जब हम नोट्स बनाएंगे तो हम भी निमोनिक्स क्लास में साथ में बनाएंगे. ठीक है. सो निमोनिक्स इज अ वेरी गुड वे. एंड देन कम्स रिवाइज पास्ट एग्जाम. सो पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ये एक रिकॉर्ड रहा है. जैसे जब हम मंडे को हेरिडिटी के ऊपर मास्टर क्लास करेंगे तो हम उसमें बोर्ड एग्जाम्स में हेरिडिटी चैप्टर के पास्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. एंड यू विल सी दैट देयर आर वेरी 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 लिमिटेड क्वेश्चंस which have been asked for like 5 years. सेम क्वेश्चन, कट कॉपी पेस्ट, हर साल हेरिडिटी चैप्टर में से पूछा गया है. दिस गिव्स यू एन अपर हैंड टू मास्टर बायोलॉजी. डू द पास्ट ईयर क्वेश्चंस, डू द पास्ट ईयर पेपर्स. इस साल जो आपका बोर्ड का पेपर पैटर्न है वो है कि आपके 5 सेक्शंस होने वाले हैं. 1 2 3 5 4. 1 mark questions, 2 mark questions, 3 mark questions, 5 mark questions, and section E is going to be 4 mark questions, right? So we will go through with your CBSE board paper pattern. बहुत जल्दी डेट शीट भी आने वाली है. इट वॉज सपोज टू कम डे बिफोर yesterday, but then the date sheet has been postponed to December now. As soon as the date sheet comes, we will be the first people to tell you, but for that you have to subscribe to the channel, right? So go through your past year papers. That gives you a really upper hand. And learn biology word with its meaning. Now biology is all about concepts, it's all about terms, it's all about memorizing. So what you do is you just break the concepts to learn. जैसे अगर मैं word autotrop लूँ तो इसको मैं कैसे याद रखूँगा? The word auto means self and the word tropism means nourishment. The ones those who nourish themselves are called autotrophs. ठीक है. बट सर आप बोलोगे सर लेकिन केमोट्रॉपिक मूवमेंट तो मतलब मूवमेंट बिकॉज ऑफ अ केमिकल, right, or a chemical stimulus. Yeah, hydrotropism is movement towards water, but here we are talking about tropism and tropism. They are different. Tropism matlab movement, hydrotropism is movement towards water, but here we are talking about autotroph. Troph is nourishment.
auto is self, the ones those who nourish themselves, green plants, they are called as autotroph. Okay? So break down the terms and that will help you to learn better. And that's it. With that, once again, I would like to tell you that make sure that you visit the Embibe page, because it is the one-stop destination if you want to learn smoothly, if you want to learn effectively, right? It has got 3D assets, it has got your NCERT books and many other reference books. It has got questions, it has got solutions, it has got tests, assignments, study material, basically anything and everything that a student can ever ask for. And guys, also connect with us on Telegram if you want to have a vis-a-vis with your favorite educator at Embibe, whether it is Sushmita ma'am, Tushar sir, Ankana ma'am, Surabhi ma'am or myself, then Embibe Telegram channel is your place to be, right? Also here you get PDF of all the sessions that we conduct on YouTube, and also guys, you can ask all your doubts and get them solved. So until we meet next, I'm going to see you today night at 8 p.m. I'll be meeting you sharp at 8 p.m. with a very interesting quiz on food. Okay? We'll be meeting each other at 8 p.m. live with a quiz on food. But until we meet next, take care of yourselves, stay healthy, stay happy, stay blessed. This is Pritesh, your host, your dose, and a proud educator from Embibe, signing off for now. And till then, keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.